Hi everyone, I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments and ex-equity research analyst at Goldman Sachs. This is part 2 of identifying high growth companies. We discussed Sky Gold, Acuta's Chemicals in the first part. The second part is going to be equally interesting. So guys, one way to generate alpha in your portfolio is by investing into companies and industries that are growing faster than the country's overall growth rate. For example, India typically grows at 6% in real GDP terms. And when you add inflation of 3 to 4%, the nominal growth rate comes to around 9 to 10%. Over the long term, this is the rate at which the revenues of companies grow at. The reason why this video is very special is because in this video, we'll discuss two companies that are growing at a CAGR of at least 20%, which is roughly twice the country's nominal GDP growth rate. The kind of consistency that we have delivered with top-notch institutional equity research quality, I think there's no reason for you not to subscribe to this channel. Do subscribe because more than 90% people don't, and it keeps us motivated to deliver content like this. First company we discuss is Solar Industries. नाम सोलार है लेकिन कंपनी का सोलार एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है. सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया की लार्जेस्ट एक्सप्लोजिव और एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरर्स में से एक है. कंपनी माइनिंग एक्सप्लोजिव, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड नाउ दे हैव इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन रॉकेट्स, एम्यूनेशन एंड डिफेंस सिस्टम्स. Solar Industries is a very critical company in the defense ecosystem. वो ब्राह्मोस एंड कामिकाजे ड्रोन्स भी बनाते हैं. So very high tech company, not a commodity manufacturer anymore. And ये transformation numbers में clearly दिख रहा है. The company has seen a solid revenue CAGR of 30% from 2,500 crores in FY21 to 10,000 crores in FY26. Because defense is a high margin business, the EBITDA margins have improved from 20% to 30%. मतलब profitability has grown faster than revenue at a 40% CAGR. This is not stopping the management by any means. उनके ambitions और बड़े होते जा रहे हैं. अब मैनेजमेंट FY27 में अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहा है, जो 40+% ग्रोथ इंप्लाई करता है. इस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रीजन है 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक. इसमें से ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ डिफेंस ऑर्डर्स है. साथ ही कंपनी FY27 में 2,000 करोड़ से ज्यादा कैपेक्स करने वाली है आफ्टर स्पेंडिंग नियरली 1,700 करोड़ इन FY26. अगर एग्जीक्यूशन स्मूथ रहा तो सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस कंपनीज में से एक बन सकती है. अब बात करते हैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज की. सुप्रिया APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करती है. फॉर पीपल हु डोंट नो, आप जो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं उनका कोर इंग्रेडिएंट API होता है. कंपनी का 80% से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स से आता है, विच मेक्स इट अ लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी ऑफ डेप्रिशिएटिंग रुपी. पिछले कुछ सालों में कंपनी ने स्टेडी ग्रोथ डिलीवर की है while maintaining strong EBITDA margins of around 33 to 35%. The company has also seen a solid revenue CAGR of 21% from 460 crores in FY23 to 830 crores in FY26. The management is targeting a long-term growth rate of 20%, and they have been able to deliver that as well in the past. They have been investing significantly in new capacities and new business lines that offer high margins. They have almost doubled their capacities by investing 350 crores in new projects. They have also been significantly investing in the CDMO business, where they're gaining traction from global innovators. This is a very rare combination of 20+% revenue growth CAGR and a very high margin business. Subscribe for part 3 of this video and share this video with your investor friends.